जय जगन्नाथ वेलकम टू CHSE ओडिया समस्त को आज क्लास को स्वागत। हाउ आर यू ऑल केमती अच्छे समस्ते केमती अच्छ आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जय जगन्नाथ अगेन वेलकम टू CHSE ओडिया समस्त को आज क्लास को स्वागत। प्लीज जॉइन समस्ते जॉइन कल पढ़ा ताहले लेट्स स्टार्ट रीडिंग लेट्स स्टार्ट लर्निंग नॉट रीडिंग लेट्स स्टार्ट लर्निंग। एटा गोटे पीडीएफ रो मु पढ़ाऊँ आज ठीक अच्छे पीपीटी भी थिला मो पाखरे if I go for the so आम देखा दिस इज बायोमोलिक्यूल्स एंड दिस इज इंट्रोडक्शन। फर्स्ट आम देखा फूड you can see food then food is converted into your cell organelles further cell and again tissue जाउची food जहाँ हमें खाऊचे सी simplified होची all are getting simplified then these are going to cell organelles again cell tissue ru पुनी organs and organs ru living organism okay so bio means biomolecules that our food contains are first one is carbohydrate amino acids protein nucleic acid vitamins hormones so amara ebhaliya 6 टा biomolecules रही right there are 6 biomolecules present in our system ठीक अछि what are they first one is carbohydrate and amino acid protein nucleic acid vitamins hormones
ठीक अच्छे बायो माने obviously you know bio living things molecules means molecules so the molecules which are essential for us जो molecule गुड़ाक आम पाई essential these are known as biomolecules okay further जिबा में carbohydrates are the primarily produced by plants and from a very large group of naturally occurring organic compounds so कार्बोहाइड्रेट होची कोठु आ रही था बेसिकली तुमरो प्लांट रु बाहर था आ तुमरो लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स था ओके कार्बोहाइड्रेट्स further some examples are sugarcane आखु समझते देखिचो you know sugarcane आखु then wait I am repeating this part समस्ते जेहेतु किछि पिला हमरो YouTube रे थिले किछि पिला हमरो Google Meet रे जॉइन करि पार नथले सो फॉर देम अगेन मते आउटरे किछि पार्ट रिपीट करिया को पड़छि लेट मी रिपीट ऑल द थिंग्स जे तुमरो बायोमोलिक्यूल्स माने लिविंग मॉलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स रो एग्जांपल कोन कोन रहछि कार्बोहाइड्रेट्स अमीनो एसिड्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड विटामिन्स हार्मोन्स ओके further carbohydrates जो दिन देखिबा carbohydrates are primarily produced by plants and form a very large group of naturally occurring organic compounds so बहुत सारा organic compounds को नेकी रहता है जनरली तुम्हारा कोटा carbohydrate okay clear बुझियला carbohydrate रो next some common examples are sugarcane this is sugarcane and glucose starch etc okay clear carbohydrate समस्त डाउट क्लियर होला ना carbohydrate related किछि इशू रही carbohydrate कौन actually carbohydrate source of carbohydrate बुझियला next carbo means hydrate means कौन कार्बन प्लस वाटर दबा कार्बोहाइड्रेट और सिंपलेस्ट रेशियो होची CHO 1:2:1 taking some examples first one is glucose ro molecular formula anyone who can tell glucose ro formula yes very good C6H12 O6 very good 3S3 and Sandhya then here in terms of H2 we can write it as ताको को भले फॉर्मेट रे लिख परिबा C6H2 रो होल 6 right so कार्बन और H2O 6 टा क्लियर कार्बन माने कार्बन हाइड्रेट माने वाटर नेक्स्ट आउ एग्जांपल लवा सुक्रोज रो फार्मूला के जानिचो मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 आकु से भला फॉर्मेट रे लिखले कोन हो H2O फॉर्मेट रे से भला फॉर्मेट रे जेम ग्लूकोज रो सेकंड फॉर्मेट रहला इन दिस वे सेम फॉर्मेट रे लिखले कोन हो एनीवन who can tell me that what is the format कोन हो के भी कहि परियोनी एटा yes C12 yes C12H2O11 whole 11 very good C12H2O whole 11 next hence these are called hydrates of carbon carbohydrate clear name बुझा पड़ला is it clear to all of you okay next
General formula can be written as CHS2 whole y. X may or may not be equal to y. The most common sugar used in our homes are sucrose. Okay, this is your sucrose जोड़ा में जो sugar use करचे, and the sugar present in milk is known as lactose. Acetic acid is not a carbohydrate, whereas raffinose is a carbohydrate. It indicates that the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrate. So ये तुम्हें देखो CH3COH कार्बन केतरा दुईटा, हाइड्रोजन केतरा चारटा, O केतरा दीटा. So आको हमें जदि हमें फॉर्मेट लिखिबा C2H2O whole twice. But it a carbohydrate ki? Is it a carbohydrate? Acetic acid is a carbohydrate? No, sir. But it fits to the formula of carbohydrate. Okay, so जो जहाँ भी formula से तो fit कले, that may not be classified as carbohydrate. Then the compound that derived from carbohydrates classifications are that derivates from carbohydrates classification. कोटा generally हबो नाही, that does not Acetic acid. sorry deviate कोइची sorry deviate कोइची acetic acid माने deviate करियो. Classification of carbohydrates. Carbohydrates are also called as saccharides. Greek word saccharon means sugar. Okay, so saccharides further it can be converted into mono, oligo, polysaccharides. Mono माने गोटी, oligo माने बहुत सारा, दुईटा, polygo माने बहुत सारा. Monosaccharide that cannot be hydrolyzed to give rise to simpler units of aldehyde and ketone is known as monosaccharide. About 20 monosaccharides are known to be occur in nature. Examples such glucose, fructose, ribose, etc. Clear? Monosaccharide माने केवल single water माने single carbohydrate थिबो ताकू further hydrolyze कले से आउ कोनोसी polyhydroxy aldehyde दबो नाही, केवल गोटी aldehyde बा गोटी ही ketone थिबो. कार्बोहाइड्रेट रे जनरली aldehyde और ketone थिबो, गोटी aldehyde और गोटी ही ketone थिबो. Okay, oligosaccharides, the carbohydrates that yield 10 to 2 to 10 monosaccharide units are known as oligosaccharides. They can be disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharides depending upon number of monosaccharides. For example, sucrose is a sucrose होची तुम्हारा glucose plus fructose. Maltose होची glucose plus glucose. ताले sucrose रो formula कौन? What is the formula for sucrose? The formula for sucrose is sucrose रो formula is दियो. Anyone sucrose रो formula? Glucose रो formula होची C6H12O6. Again this is also C6H12O6. Sucrose रो के कोई परिवो? Who can tell me that what is the formula of sucrose? So C12. Yes. H22. Yes. O10. O 11, not 12. It actually okay, no issue. Actually गोटे water पळेइबो, गोटे water hydrolysis ହେଲା ପରେ. Yes. C12H2O whole 12. Very good. C12H2O whole 11. गोटे H2O actually hydrolyze हबो, गोटे hydrolyze हबो, hydrolyze रे use हेजो. So C12H2O whole 11. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So मते कहि परिबो what is the formula for maltose? Maltose रे कोन हबो? Glucose plus glucose एठी भी अछि. What is the formula for maltose? Maltose रो formula ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज. माल्टोज रो कोन हबो? कहि परिबो कि? Who can tell me what is the formula of maltose? Anyone?
same as your sucrose. Sucrose जहाँ formula यार भी तास formula. Clear? Clear बुझेला? Same formula. Both have same formula. Okay. Yeah. Next we will move to next slide. Polysaccharides. Carbohydrates which need a large number of monosaccharides are known as polysaccharides. Examples are देखिवा starch, cellulose, glycogen, gum, etc. These are the examples of polysaccharides. एगुड़ा कहूँ polysaccharide example. बंटी नमस्कार बंटी यूट्यूब रे बहुत जन पिला अछंती यूट्यूब रे जने मेसेज करचंती नमस्कार बंटी केमती अच्छा हाउ आर यू एंड व्हाट अबाउट योर क्लासेस आउ तुमे एबे को क्लास पढुछ आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड क्लास 12 so it was all about classification of next monosaccharide it is based upon the number of carbon atoms and functional groups okay so carbon atom जदि हम देखिबा तीनटा रहबो ट्रायोस आल्डो ट्रायोस तीनटा कीटोन रहले कीटो ट्रायोस चारटा रहले टेट्रोस आल्डो टेट्रोस कीटो टेट्रोस पांचटा रहले पेंटोस आल्डो पेंटोस कीटो पेंटोस छटा रहले एक्सोस आल्डो एक्सोस कीटो एक्सोस अच्छा हां 7 रहले very good so this is the classification of monosaccharides एमदी क्लासिफाई होता है बंटी कहले नो सर आई एम इन क्लास 12 ओके राइबोज इज ए डेस मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड राइबोज इज ए मोनोसैकेराइड वेरी गुड पॉलीसैकेराइड इज ए डेस कोडा पॉलीसैकेराइड very good further classification of carbohydrates रे further based on functional group taste and solubility nature of reaction not chemically जदि हम देखिबा functional group अनुसार optically active polyhydroxy aldehyde और ketone is known as your दरकार नहीं glucose होची molecular formula this one एटा important देखो first carbon होची aldehyde you can see this is your aldehyde देखि पारछो this is aldehyde and sixth carbon is a alcohol sixth alcohol fifth alcohol fourth alcohol even एटा भी alcohol किंतु एडी कोन रहिछि हाइड्रोजन गुडा को एपट साइड रहिछि रिमेनिंग पार्ट केवल OH टा एठी एभला रहिछि सो याको जने हम हैंड रे करिबा तुम हाथ को जदी करिवो एभला तुम चारिटा फिंगर तुम आडू को रख चारटा फिंगर केमिति जस्ट लाइक थंब डा ऊपर को फेस करी रख हाथटा को एभले रख इनिशियली ऊपर को फेस करी रख पुणी तुमरो एई आंगुठीटा को मोड़ी दियो माने बैक कर दियो एभले कर दियो लेट इट मेक इट लाइक दिस ओके अगेन आई एम ड्राइंग दिस स्ट्रक्चर सो इटा एभले हबो आई एम नॉट सो गुड एट ड्राइंग फर्दर एटा जेतोले एंती हबो ए हाथटा मोड़ी ही जाइछि क्लियर हाथटा मोड़ी ही रहिछि ताले एभले हबो बुझियला एटा को एभले आमे जनरली यो यो को नांती यो यो एटा को से वाला यो यो कार्बोहाइड्रेट रो यो यो ठीक अछि दिस इज ग्लूकोज क्लियर बुझियला ग्लूकोज रे एटा होछि स्ट्रक्चर ओके एटा एटा को की ग्लूकोज कहै जियो एटा को ग्लूकोज कहै आ सब गुडा होछि सेकेंडरी अल्कोहल सो गोटे होछि अल्कोहल गोटे होछि एल्डिहाइड तो एथि पय एटा कहै जिवो पीएचए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बहुत सारा हाइड्रोक्सी थिबारु पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बा पीएचए फ्रुक्टोज को पट रहबे देखो फ्रुक्टोज रे कीटोन ग्रुप आसीबो फ्रुक्टोज रे तुम्हारा कीटोन ग्रुप रहि जिवो ओके सो ए भला एठी भी अल्कोहल और कीटोन सो एटा को अल्कोहल कीटोन सो इट इज
PHK, polyhydroxy ketone. Clear? Upon hydrolysis, sucrose will give rise to glucose and polyhydroxy ketone. Okay, so we will get a PHA and PHK. Jai Jagannath, Radha Pyari, Jai Jagannath. Okay, Bunty, you are in class 12. Acha. So carbohydrates are PHA. Put a minute later. Let me erase this. So this is PHK. Further, sucrose को कले भलिया गोटे PHA दबा और PHK. So carbohydrates are either PHK or PHK. PH माने तुम्हारा कौन आसिबो ग्लूकोज, PHK माने fructose, or your compounds which on hydrolysis give rise to PHA or PHK. Our classification of carbohydrate based on taste and solubility. Sugar and non-sugar. Sugar माने crystalline, for the sweet to taste and soluble in water. हाथ को खदड़िया लगुथिबो, टेस्ट कले मीठा लागिबो आ वाटर soluble. नॉन सुगर प्रॉपर्टी जो देखिबा amorphous और tasteless, टेस्ट रहिबनी. amorphous माने कोन हाथ को खदड़िया लागिबो बदलरे रफ लागिबो. insoluble in water, water insoluble हबो नाही. For example, benzoic acid, cinnamic acid, these are. Next, nature of the reaction: reducing sugar, non-reducing. They reduce failing solution in Talon's reagent. These are known as reducing sugar. And non-reducing, disaccharides in which aldehydic and ketonic groups are free. कौन ना aldehyde group और ketone group freely move करि परथिबो, free थिबो. That is known as reducing sugar. Non-reducing sugar, example maltose, lactose. Non-reducing, they do not reduce with failing solution. Tolerance and tolerance reagent, disaccharides in which aldehyde or ketone groups are bonded, we have as non-reducing. So जोटी bond हेगी थिबो aldehyde और ketone group का bond हे थिबो freely न थिबो सेटा non-reducing sugar कह जिवो. ठीक अछि. Example sucrose. राधा प्यारी क्वेश्चन पचारचंदी सर केमिस्ट्री रे कोन कले 70 प्लस रहिबो पीवाई की कले हे जिवो की. राधा प्यारी ओनली पीवाई क्यों नो हा, you have to solve all the questions like तुम्हारा other questions रही छि जेमती तुम्हारा कोन कोन माने ट्राई तुमे सब बेले पीवाई को सहित sample question paper follow करो. Best to follow sample question paper. If you are in CHSE, try to focus on long question. If you are in CBSE, try to focus in on granular questions. 1 mark और 2 mark ऊपर बेसी फोकस करो जी CBSE थिबो. आ CHSE जदी हेथिबो 2-3 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर मेन फोकस करिवो. कारण CBSE रे बहुत क्वेश्चन 1-2 मार्क 2-3 मार्क भीतर बहुत क्वेश्चन आसे, राइट. नेक्स्ट, केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर दिस. केमिकली कार्बोहाइड्रेट रो ना कोन? Very good. This is option number D, polyhydroxy carbonyl. The simplest ratio of carbon and hydrogen in carbohydrate is generally carbohydrate कौन हुए 1:2. Very good. Next, preparation and structure of glucose. Glucose the most abundant, naturally abundant sugar होची glucose, found in grapes, honey and human blood. So इटा तुम्हारा grapes रे मिले, honey, human blood. Okay. Preparation of glucose. Glucose केमदी prepare करिवा? Laboratory method, commercial method. If I say that, I think from sucrose, lab method from sucrose, that is sugar cane. Sucrose
हाइड्रोलिसिस कले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कले इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम विल प्रोड्यूस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को केमती सेपरेट करवा ग्लूकोजटा हूँ एक्चुअली कौन आल्डिहाइड ग्रुप फ्रुक्टोजटा कौन कीटोन ग्रुप आल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने कौन रिएक्शन किए जानिच को रिएक्शन आल्डिहाइड रिएक्ट करे किंतु कीटोन दिएनि कोटा कहि परिबो कोटा कहि परिबो टॉलेंस रिएजेंट मन रख कौन हम टॉलेंस रिएजेंट आल्डिहाइड दिए किंतु कीटोन दिए नहीं बा फेलिंग सॉल्यूशन आल्डिहाइड दिए किंतु कीटोन दिए पारे नहीं तो जोटा देला सेटा होची ग्लूकोज जोटा देलानी सेटा होची फ्रुक्टोज ए वाला वे रे हम अलगा करि परिबो so while cooling alcohol is added to the reaction mixture and glucose is being insoluble in alcohol crystallizes out fast तो एमिति भी हे परिबो आ ग्लूकोज को कोन करे दिबो दीड जाको मिसई दिया जिवो कोथरे अल्कोहल रे जोटा प्रथमे क्रिस्टल हे जिवो सेटा हे जिवो तुम्हारा ग्लूकोज जोटा डायरेक्ट क्रिस्टल हो दैट इज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज इज बीइंग मोर soluble in water remains in the solution रे रहिबो crystals of glucose are separated by filtration crystallization समस्ते करिचो मोर सॉल्ट रो करथिबो have you done potassium ro crystallization then from okay from starch रे तुम्हारा excess of sulfuric दिया हबो and by adding chalk powder देगी माने dilute estrus ऊपर देले हे जो the colored impurities are removed by adding activated charcoal the charcoal मिसे देले colored impurity गुडा को absorb कर देबो and further glucose crystal गुडा को कूलिंग करके फिल्टर कराबो तबरे कूल कराबो कूल कले ग्लूकोज आसीबो ओके glucose is an aldohexose also known as dextrose it is the monomer of many larger carbohydrates namely starch and cellulose it is probably the most abundant organic compound on earth it was assigned the structure given on the basis of the following evidence तो यार स्ट्रक्चर ए भलिया CHH whole 4 तले CH2H ऊपर CHO on prolonged heating with HI it forms N-hexane यार माने एटा 6 टा कार्बन रही सो याको जदि हम हिट करबा ए कोन दबो N-hexane दबो तो यार माने एटी 6 टा कार्बन रही ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन से तो रिएक्ट कले कोन दोची ऑक्साइन दोची आउ हाइड्रोजन सियानाइड से रिएक्ट कले सियानाइड तार माने एटा CHO ग्रुप रही CO ग्रुप रही कीटोन ग्रुप सो ग्लूकोज सहित हम जदि जे कोनोसी मन रख RC डबल बॉन्ड O R डैश बा एनी आल्डिहाइड बा कीटोन ग्रुप सहित जेतो हमें ऑक्साइन माने NH2 सहित रिएक्ट करबा ठीक अछि NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन सहित रिएक्ट कले ये कौन है ना H2NOH H2O की रिमूव होगी पड़ेगा and further C double bond N OH is your this is your oxime so in this way you will get the oxime plus water acid clear आउ कौन aldehyde ketone जब हम देखिबा this is aldehyde और ketone plus तुम्हें कौन नबा ना HCN जो हमें रिएक्ट करबा you will get carbon OH आउ CN तुम कहबो केमती हला ना एठी पोलराइजेशन हला this is delta minus this is delta plus H plus CN minus so CN minus टा क्वाडे जीवो प्लस पाखकु प्लस माइनस टा क्वाडे जीवो प्लस पाखकु एंड ऑक्सीजन रो माइनस टा H पाखकु जीवो so OH CN क्लियर सो एठो हम बुझियला जे ग्लूकोज रो कोन रहिछि एठी कार्बोनिल ग्रुप रहिछि देखो ये C double bond on oxime this is cyanohydrin glucose cyanohydrin clear बुझियला बुझि पारला ना कार डाउट अछि is there any doubts आगो प्रोसीड करबी गूगल मीट जो माने अच्छो is there any doubts doubt अछि okay so glucose is oxidation कले मन रख ग्लूकोनिक एसिड आसीबो सबले RCH2 माने
aldehyde को oxidation करिवो in presence of alkaline KMNO4 you will get carboxylic acid एटा तुमको पढ़ेइबा okay so it is COH हो gluconic acid is it clear Yes, sir. okay further nitric acid presence रे तो हमें ग्लूको ये करिवा it will give rise to saccharinic acid as well as gluconic acid so saccharinic acid और gluconic acid भीतर difference कौन ये जो alcohol टा थिबो सी भी तुमरो carboxylic acid हिजबो ओके तो ये गोटे प्राइमरी अल्कोहल अच्छी बोली जाना पड़ो ये आम जानले जे ये अल्कोहल अच्छी ना ग्लूकोनिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडेशन कले सैकारिक एसिड आसी ना क्लियर नेक्स्ट आसवा आम सो इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लूकोज को कमर्शियली कोड प्रिपेयर कर यस स्टार्च कमर्शियली स्टार्च थी लगे हमारा आंसर क्वेश्चन का यस फ्रॉम स्टार्च थिला स्टार्च इज ए ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड स्टार्च कौन वेरी गुड स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड यस नेक्स्ट hydrolysis of sucrose produces glucose and fructose which of the following is not a sugar sucrose glucose fructose cellulose sugar कोटा नुह cellulose good next preparation of structure of glucose further एठी हमें ताको जे हाइड्रोलिसिस पुणी थरे एसिडिक एनाइड्राइड दबा इतने सारा रिएक्शन लिखा दरकार नहीं आल्डिहाइड आउ ये दबा सो हियर इट कन्फर्म दैट ये OH 5टा रही सो ये हमें ग्लूकोज कौन पाइले स्ट्रक्चर सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये हमें ग्लूकोज स्ट्रक्चर पाइगले क्लियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मन रहा समस्त ग्लूकोज स्ट्रक्चर Yes, sir. and derivatives of glucose are gluconic acid CH बदल saccharinic acid COH further dextroglucose और levoglucose D माने dextro माने positive L माने negative dextro माने clockwise और L माने anti-clockwise very good so ये हमें जो देखिबा glyceraldehyde contains हमें जो देखिबा ग्लिसरल्डिहाइड रे तुमरा एठी देखि परिबो ग्लिसरल्डिहाइड OH टा राइट साइड थिबार एटा प्लस OH रा लेफ्ट साइड थिबार एटा माइनस सिमिलरली डेक्स्ट्रोग्लूकोज जो देखिबा एई OH टा कोपट साइड रहिछि तळ OH टा प्लस सो इट इज डेक्स्ट्रोग्लूकोज ताले लेवोग्लूकोज कोठा हबो लेवोग्लूकोज रो स्ट्रक्चर आगु करिवा नॉट दरकार साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नॉट डेस्ट्रो कराला प्लस स्ट्रक्चर ग्लूकोज रो बट लेवो हिलानी नो साइक्लिक स्ट्रक्चर wait तापर नेक्स्ट जीवा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सो ग्लूकोज रो स्ट्रक्चर जदि हम देखिबा केमदी फास्ट हमें स्किप टेस्ट बा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट कथा जो देखिबा ग्लूकोज रिएक्ट करिवो नाही तार माने हमें कोन बुझिबा यार माने जे एठी किसी ना किसी रही आल्डिहाइड टा बाउंड है कि so the penta acetate of glucose does not react with hydroxylamine indicates that the free absence so free CHO माने एटा एक्चुअली आल्डिहाइड कहाँ से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल
for DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो बा स्किप बेस सहित हो रिएक्ट करबा कथा के अल्डिहाइड किंतु एटा रिएक्ट करूनी माने ए जो अल्डिहाइड टा रहिछि एटा फ्री नुह एटा ताले बाउंड हेगी रहिछि ठीक अछि सो एटा हमें कहि परिबा दैट ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स व्हिच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा अल्फा फॉर्म रो मेल्टिंग पॉइंट होछि 419 केल्विन and crystallization concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. So glucose 303 Kelvin re crystallize hochi and this is the structure of glucose, cyclic structure of glucose. तुम देख पारछो this is 1 2 3 4 5 6 this is the 6 numbers okay यदि ड्रॉ करबा ए भले हबो HOH this is one first carbon again HOH this is 2 second carbon OHH this is 3 third carbon again HOH fourth carbon CH2H H sixth carbon and this is O तार माने ये जो CHO टा रही CHO टा फर्दर साइक्लिक हो जाउची आ तुमरो कंडेंसेशन है कि ए भलिया CHO ग्रुप जो रही इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CHO एक्चुअली CHO ग्रुप टा एटा कोन हो जाउची ना अल्कोहल हो जाउची CHOOH प्लस OH हो जाउची आ गोटे OH एक्स्ट्रा लागि जाउची तो OH गोटे एठी आसिक लगी जाउची कोठो OH गाउची ना एई पटो OH गोटे ट्रांसफर होउची कोन नंबर ए कार्बन रु 5 नंबर कार्बन रु गोटे OH ट्रांसफर होउची 1 नंबर को जाउची सो ए भलिया एठू OH गोटे ट्रांसफर होउची आ एठी एमानक भितर ऑक्सीजन रो बॉन्ड होउची आ CHO ग्रुप टा ए भलिया ट्रांसफर होउची क्लियर बुझियला ना डाउट अच्छे पुणी बुझेबी कि ना बुझियला जो मैंने गूगल बुझियला एटा एक्चुअली CHO थिला देखो एटा 1 नंबर भाव एटा CHO ग्रुप थिला एटा एक्चुअली CHO थिला C डबल बॉन्ड O H थिला ठीक अछि एटी बॉन्ड नथिला बोली भाव एटा किछि बॉन्ड नथिला राइट एमदी किछि बॉन्ड नथिला एटी इनिशियली भाबो ताले एटी कोन हो एटा CHOH एज यूजुअल रहबो एटे O डबल बॉन्ड OH रहबो आ जो OH टा एटा रहबो एमती ग्लूकोज टा नै बुझिउछि एटा 1 नंबर कार्बन ग्लूकोज रो CHO अल्डिहाइड 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर सबुडारे CHOH 6 नंबर टा CHOH क्लियर यस सर तो आ पर स्टेप रे एक्चुअली कोन होछि ना OH आउ H OH आउ OH एटा एक्चुअली ट्रांसफर हो जाउछि कंप्लीटली एठी की आ एटा कोन हो जाउछि एठी O टा ए पाखु कंडेंसेट हो गले कोन होछि ए सिंगल बॉन्ड टा डबल बॉन्ड हो जाउछि डबल बॉन्ड टा सिंगल बॉन्ड हो जाउछि आ एठी OH लागि जाउछि क्लियर बुझियला बे स्ट्रक्चर टा साइक्लिक स्ट्रक्चर यस सर ओके so beta form da is obtained by the crystallization of 14 saturation aqueous solution of at 373 Kelvin so this is beta glucose टा ए भलिया रहिछि अल्फा टा अलगा पैटर्न थिला बीटा टा ए भलिया जस्ट डिफरेंस कोन अल्फा और बीटा भितर एठी OH टा ऊपर रहिछि बीटा रे आ अल्फा रे OH टा तळे रहिबो क्लियर एटा एक्चुअली ए जगह टा चेंज जदी हिजो एटा H
एटी OH जदि हो दिस इज अल्फा ओके अल्फा और बीटा बुझीला so it is proposed that one of the OH group may added to the CH group and this form a hemiacetal structure so hemiacetal structure माने आमे कार्बन फार्बन किछि कार्बन हाइड्रोजन रखिलेनी ए भलिया रखिदेले so this is alpha D glucose beta D glucose तुम देखु तो अल्फा ग्लूकोज रे तळे अछि बीटा रे ऊपर अछि एटा मने रहइबो ग्लूकोज टा कोठी रहइला एटा दरकार नै एते डिटेल्स अल्फा रे तळे रहइबो बीटा रे ऊपर रहइबो क्लियर so it is found that glucose forms a 6-membered ring in which OH at C5 is involved in ring formation so 5 number ta ring formation रे यूज हो this explains that the CHO group is not free CHO group टा एठी absent अछि बोली देखाउछि सेथमे एटा स्किप टेस्ट सहित रिएक्ट करू नाही बुझियला एटा मु देखुथिली 5 नंबर ए होला हैला so this is beta D glucose और alpha D glucose clear बुझियला pyran is a cyclic organic compound with one oxygen atom so एटा क्वाज सेथमे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज पाइरानोज माने कहा को ना एटा को कहजिबो पाइरान ए मॉलिक्यूल टा पाइरानोज दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्फा ग्लूकोपाइरानोज दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड एटा को कहजे तार हाउडथ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हाउडथ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जोटा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड H लिखिबा को पड़िबन H न लिखिले बस दिस इज नोन एज Haworth structure of glucose okay anomers not important anomers both so alpha structure beta structure and this is known as pyranose structure this is known as pyranose H no likhile Haworth structure and H likhile pyranose structure epimers जदि हम देखिबा ग्लूकोज रो गोटे एपिमर रहिछि दैट इज डी मानोज कौन तुम्हें देखो यार जस्ट सब सेम केवल ए पाखटा OHCHO सब रही केवल ए पाख फंक्शनल ग्रुपटा चेंज होती ग्रीन जोटा है सॉरी ग्रीन जोटा है देख ये तार मिरर इमेज है या कह मानोज तार माने ये तुम कायरल सेंटर रही पायरानोज इज ए 6-membered ring with 5 carbon and 1 oxygen okay so it is all about carbohydrate part ठीक है carbohydrate is over here I mean next class मैंने वन शॉट पार्ट 2 रखिबा जोडी हमें पढ़िबा कौन पार्ट्स हमें तापर पढ़िबा अदर पार्ट्स लाइक तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट पर प्रोटीन एंड मु नोट रू पढ़े देबी एठी बहुत गुटे जिनस लेखा रही दिस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट आम नेक्स्ट क्लास देखा प्रोटीन एंड इट्स डीनेचुरेशन प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देन एंजाइम्स विटामिन्स डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन फर्दर केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर डीएनए फिंगरप्रिंट सो आउ गोटे क्लास लगे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पूराटा लगिला आ गोटे क्लास कले आमर यहाँ सरीज आ गोटे क्लास माने आसंता काली ए टाइम रे ही रहिबो प्रोबेबली आ बड़का पार्ट गुडाक आम पढ़ा लाइक तुम अन्य जो चैप्टर रही आ